during this session. So, hello, Sadhguruji. Namaskaram. My name is Mohinish. I'm a final year mechanical engineering student here at SSN. Namaskaram, Sadhguru. My name is Tejas, and I'm a computer science student in my final year. my name is Shruti. I'm a final year from electrical and electronics engineering. So, without any further Her accent is really good. ado, let's dive into the questions. So, coming to the first question, a significant population in our world identifies as religious, and they do so for a number of reasons. Some of them state it's for peace or a way of life or Our topic is religions, so Guruji is getting geared up. some direction. And they bring up their children with religion. They sort of imbibe values and principles using religion as a channel. But on the other hand, we have some people whose values are so deeply entrenched in religion that religion ends up becoming the first priority and humanity ends up becoming the second. And we see examples of this. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लोग रिलीजियस को आगे रख के ह्यूमैनिटी को पिछले गली में डाल रहे हैं. ये बिल्कुल गलती है. गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है दूसरों का दर्द. देखिए, सबसे आसान बात यह है कि आपको मनुष्य क्या कर रहा है उसको लेकर आप किसी धर्म या जात का उल्लेखन करें. वो क्या कर रहा है, ठीक है. अगर आप देखें उसका डेली एक्टिविटी में उसने क्या क्या किया, ये नहीं कि उसने क्या लगाया. बात समझ रहे हैं ना मेरा. वो क्या लगा के जा रहा है. हम लोगों ने एक मूवी देखा था अब तक, जॉली LLBS, जो अक्षय कुमार का मूवी था. अगर आप लोगों ने उस मूवी को देखा होगा तो आपको याद है कि उसमें एक पादरी जो उसमें जो गवाह होता है वो एकदम साधु के वेश में बनारस में जाके छिप जाता है और वो साधु बन के साधु वाला लाइफ जीता है. आपको याद है. और वो कुछ श्लोक याद भी रहता है, लेकिन लास्ट तब जब अक्षय कुमार उसको प्रश्न करता है, लास्ट में पकड़ा जाता है कि वो बोलता है मुझे पता नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि बाहर से हम लोग क्या लगा रहे हैं वो डिस्गाइज है. कोई भी रिलीजियस कोई ख़राब सिखाता नहीं है. बहुत सारे कंट्री जो बहुत प्रॉस्परस है ना, तो उन लोगों ने रिलीजियस का राइट वैल्यू को आगे बढ़ाया. उन लोगों ने अच्छा एक्शन को प्रमोट किया. समझ गए ना. तो हम लोग ये बता सकते हैं कोई भी आदमी अगर मोरल वैल्यूज थी, दूसरे को हेल्प कर रहा है, दूसरे के दर्द को समझ रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, दैट इज़ द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी रिलीजन. अगर कोई भी रिलीजन किसी को किसी भी तरह से हर्ट कर रहा है, ठीक है, विशेष करके आदमी लोगों को, जीव जंतुओं को, है ना, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है वो तो हम लोग को लेना ही है खाने के लिए, नरिश करने के लिए. लेकिन उसके एक्सेसिव में अगर हम लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिलीजियस. ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग वेशभूषा कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन For example, रिलीजियस कोई भी राइटली इंटरप्रेट अगर किया जाए तो वो विल नॉट बी अगेंस्ट एनीवन. इट शुड बी इंक्लूसिव. when people oppose interreligion marriages or religious riots or in extreme cases terrorism. So why not live in a world without religion? Why not teach our children and the future generations values and principles without introducing religion? I see the question is popular. We need to understand this. A human being has
many dimensions to himself or herself. अब देखिए डायमेंशंस, है ना। डायमेंशन के चक्कर में सब लोग पागल हो गए, क्योंकि अब पता नहीं चलता कि ये डायमेंशन क्या है, कैसा है, कहाँ का है। ह्यूमन बीइंग में क्या डायमेंशन है अब, है ना। तो यही चीज़ है कि अब जैसे गुरुजी बोल रहे हैं ना, हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं चलता है। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते, नहीं कुछ कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं जो कुछ हद तक कहीं सही है क्या, उसके बारे में हम लोग जांच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम लोग इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देते हैं। In these various dimensions of who we are, I will not go into all aspects of it. One fundamental dimension is, doesn't matter where you are in your life, you want to be something more. Right now, you will be thinking, if I just pass my examinations, that's good enough. But the moment you pass, you know it's meaningless, you want to find a job. The moment you find a job, you know that's meaningless, you want something else. It just goes on like this. Doesn't matter where you are, you want to be something more. So to address this longing for a human being to continuously expand, people have found various kinds of solutions. These solutions over a period of time have gotten concocted into all kinds of philosophies, ideologies, belief systems, and become variety of what you may say as religion. But essentially, it is this longing that people want to expand, they don't know how, and each one finds their own way. Now, today's way is, your idea of expansion is how many followers you got on the Facebook or Instagram. You have 1,000, you want 10,000, you have 10,000, you want 1,000,000. Well, that's your way, that's your religion right now. Only 23 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जाने माने आदमी लोगों को नहीं भेज रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द सर्च। You need to understand this. Well, maybe in another 50, 100 years, there may be a FB religion. I'm saying if it gathers enough following, it becomes that. It is for this reason, in this culture, we created a mechanism, which unfortunately, today there are some issues, but I want you to look back and see. In this culture, because people need an icon to look up to aspire for as the highest quality in their life. For this, we created what is called as deity. I want you to look at this with an open mind, not with the narrative that's going on in Chennai, okay? They created idols and deities. You must understand this. There are approximately 33 million gods and goddesses in this country. And this happened when our population was that much. That means each person had his own deity. See, if you have one deity, you have one deity, you have one deity, there's no quarrel, isn't it? If you three together have one deity and I have another one, now there's a fight. I have my own, you have your own, she has her own, he has her own. What's the problem? Hello? So we call this Ishta Devata. That is, you can create your own god. This is the only and only culture on the planet which has been conscious that God is our making for our needs. अब देखिए यहाँ पर हो जाता है मेन क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग समझ पा रहे हैं गुरुजी क्या बोल रहे हैं। हम लोग सुपरफिशियल, देखिए आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंस हो सकता है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप डीपली देखें ना, ये जो बोलना चाह रहे हैं ये काफ़ी डेप्थ में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली बोल रहे हो कि तुमको गॉड क्या है वो पता नहीं, इसीलिए तुम बिना मतलब में, अंदाजे में, अंधापन में, तुमको जिसके बारे में पता नहीं है, जिसको तुम लोग गॉड बोल रहे हो, जिसके बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है, उसको तुम कैसे मान ले रहे हो भाई?
जानना तो ज़रूरी है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे जानेंगे गॉड को, गॉड कहाँ का है एंटाइटी। फिर से मैं वही शक्तिमान की बात बोलूँगा, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान। अगर गुरुजी का आप दूसरे इंटरव्यू देखें तो वो बताएंगे कि आई नो दिस पीस ऑफ लाइफ बोलते हैं। वो नहीं बोलते कि वो दूसरे को पता है, ये पता है, वो पता है, भगवान कहाँ से गया कहाँ से नहीं आया उनको कुछ पता नहीं, स्क्रिप्चर में क्या लिखा है उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर आंसर ही नहीं है। हम लोग जो आंसर खोजना चाह रहे हैं वो बाहर में खोज रहे हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग स्पेसेस मंदिरें बनाए गए हैं, वो एनर्जेटिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन मून भी तो सपोर्ट करता है एनर्जेटिकली। तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों को कहीं पर भी जरूरी नहीं है हमको इसी जगह में जाना है, हम लोग को बाहर आंसर नहीं मिल सकता। बात समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग का उत्तर जो है अंदर ही झांकना, इन द ओनली वे आउट करने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं वो अंदर भी मिलेगा। लेकिन वो लड़की तो इतना सुंदर है यार, क्या बात बोल रहा है, दारू पीने में कितना मज़ा आता है यार, क्या बेवकूफ़ी वाला बात बोल रहा है, दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे यार, पैसा नहीं का, ये सब बाहर का चीज़ नहीं, ये आपके लाइफ का एक ट्रांजेक्शन। आप इस पृथ्वी में रहना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों के साथ बस घुल मिल के काम करें, लेकिन आप बिलोंग नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि आपका जो स्टेज है यहाँ पर वो बिल्कुल भी टेम्पररी स्टेज है, ठीक है। मेरा ऐसा है अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि अभी हम लोग को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग डिस्कार्ड कर दे सब आइडिया को। गुरुजी जगह जगह जाके यही कह रहे हैं कि सब जो तुम लेके बैठे हो सोच समस्या उसको हटाओ, रिलीजियस क्या रिलीजियस के बारे में जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग उसको हटाओ। अब डेटी क्या हो गया, अब ये डेटी के बारे में बात करते हैं, ये डेटी कहाँ से आ गया अंदर से और क्यों हम अपने आप से बनाए। अगर देखा जाए भैरवी वगैरह ये एनर्जाइज्ड फॉर्म है, और ये गुरुजी ने इसलिए बनाया क्योंकि हर आदमी का एस्पिरेशन होता है लाइफ में कुछ पाने के लिए, कुछ जीनियस को पाने के लिए, है ना। तो उसको ये मुझे खुद एक्सपीरियंस में नहीं है, मैं तो इसलिए मैं जो कोट कर रहा हूँ उनका रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने किसी विंडो को खोल दिया, अब पता नहीं विंडो कहाँ पर रहेगा, वो विंडो को खोल दिया तो आपको कुछ एक्सेस मिलेगा। कहने का मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग से पढ़ के ही एक नॉलेज को ग्रैप्स कर पाएंगे, वो परसेप्शन नहीं है, वो हम लोग का गधा मजूरी है। अगर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को ये सबसे दूर रखें ना, बहुत सारा एंटेना सिस्टम हम लोग है जो हम लोग के ज्योमेट्री में होता है। क्यों हम लोग अर्ध सिद्धांत में बैठते हैं, क्योंकि वो अलग एंटेना सिस्टम है और हम लोग बहुत कुछ ग्रैप्स कर सकते हैं। कहने का मुझे जहाँ तक का तात्पर्य है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बैठ पाया तो मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको जेन्युइनली बात करना पड़ेगा, है ना। According to the needs that we have. We want money, we have one kind of God. We want peace, we have another kind of God. We want security, we have another kind of God. For every need, we created a form. One thing is, it may be on one level, it's just a psychological process. On another level, there is a science to this, that we created certain energy forms which would function in a certain way. If I say this, unless I go into the entire science of it, there'll be many gaps and there'll be many questions will pop up. But the moment this gets endorsed by the Western world, questions disappear in most educated people's minds, unfortunately. Hello? It must get endorsed by the Western society, then suddenly it's perfect. Nobody asks any question, so let me endorse it. Man from Tamil Nadu, name Ramanujam,
You heard of him? Ramanujam? Yeah. Did not get any PhD in mathematics, did not go to any big college, just simply started pouring mathematics. If he was here, by now he would have vanished. You would not have heard of him, please know this. He went to England, That's the thing. He went to England and there they were flabbergasted. How does this mathematics come? From where? Well, a whole lot of things he himself could not explain, but the mathematics that he wrote down in his notebooks in 1908 got endorsed somewhere in 1994 or 96, saying that this math that he's talking about is the backbone for proving that there are black holes. I want you to understand, in 1908, there was no concept of black hole in the scientific community. Normally the way science proceeds is a concept, then a theory, then the math. But this man just poured out math for which there is no concept, there is no theory, there is no idea of that in anybody's mind, but he writes the mathematics for that. Sitting on his deathbed, he poured mathematics. People asked, where is this coming from? In his words, he said, my Devi bleeds mathematics. This is what he said. Because he is a worshipper of a certain deity. She's his window to the existence. So this is what deities are if they're properly created. People keep asking me, Sadhguru, where is all this knowledge coming from? You just have to open a window. What kind of window you find is up to you. But this is what energy forms were. Today, in some gross logic, very basic logic, people are trying to deny everything just because there is a certain amount of dogma gotten mixed up with this, certain amount of blind belief systems mixed up with this. Now you're trying to throw the entire thing out. This will be the dumbest thing to do, because the strength of this culture, the intellectual development of this culture and the achievements of this culture essentially depended on this, that we learn to open windows into cosmic space and know knowledge, not by book, not by learning, simply by sheer perception. So this is how the culture grew. You need to understand this is a godless culture. पता नहीं अब कहाँ से दरवाज़ा खोल दूँ, समझ में नहीं आ रहा है। दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा लगता है। देखिए, एक्चुअली मुझे जहाँ तक और एक एस्टिमेशन में मुझे देख रहा था कि कोई ना कोई विंडो तो खोला, जिस तरह से गुरु जी खोले। लेकिन एक चीज़ गुरु जी ने जो बताया है, एक आदमी को ये क्यों मिलता है, दूसरे आदमी को क्यों नहीं मिलता है। जैसे ये शक्ति गुरु जी को क्यों मिला, दूसरों को क्यों नहीं मिला। तो इस पर मेरा जहाँ तक एनालिसिस है वो ये है कि जो नेचर है वो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल जस्टिस है। वो आप पर और मुझ पर कोई डिफरेंस नहीं करता। गुरु जी ने अपने जीवन में कोई आइडेंटिटी नहीं रखा था। वो अपने घर से नहीं आइडेंटिफाई, अपने फैमिली से, अपने कंट्री से आइडेंटिफाइड नहीं थे, अपनी जाति से, किसी चीज़ से आइडेंटिफाइड नहीं थे। वो जब आपका कोई आइडेंटिटी नहीं होता ना, तो ये आपके ऊपर आके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। अब किस दिन बॉम्ब ब्लास्ट करेगा ये इसके बारे में पता नहीं, इसका एक प्रोसेस आप पक रहे, हम लोग भी पक रहे बॉम्ब ब्लास्ट होने के लिए, लेकिन कब होगा आप पता नहीं, वो उसका हम लोग को चिंता नहीं करना है। लेकिन आइडेंटिटी से हम लोगों को दूर रहना है। और डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। ये हम लोगों ने तोड़ अंडरस्टैंडिंग मैंने खुद से अंडरस्टैंड किया और यहाँ तक जाएंगे किसी दिन। तो यही गुरु जी का भी ये था कि वो
कभी भी आइडेंटिफाई नहीं थे। इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी लिमिटेड आइडेंटिटी लेके बैठे हो। अभी हो सकता है मैं बॉडी से आइडेंटिफाइड हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे शॉपिंग करने का मन करता है, खाना खाने का मन करता है। आप जो नॉर्मल आदमी लोगों को मन करता है खाने का, ये वगैरह, ये सब बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से होता है। अगर आप ज़्यादा ओवरबर्न है ना, तो उससे आप बॉडी के बारे में ही सोच रहे हैं दिन रात। तो ये आपका आइडेंटिटी क्या हुआ, लिमिटेड। कहने के बाद आपको अगर शक्ति दे दिया गया, ठीक है, आपको पूरा शक्ति दे दी गया, आप क्या करेंगे? आपको अगर पूरा शक्ति दे दिया गया है, तो आप यही नहीं देखेंगे कल स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है ना। मेरा अपना खुद का बता रहा हूँ, मुझे पूरा शक्ति दे देगा, मैं देखूँगा कि कल कितने पॉइंट में खुलेगा, आज मैं पूरा भर के मार ले लूँ, है ना। तो ये मैं अपना बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगा, या फिर मैं अपने, लेकिन वो लिमिटेड आइडेंटिटी से अगर आया हुआ है ना, तो उसका क्या रहेगा ना, ये बहुत ही मन क्लेवर मैकेनिज्म है। आप सबको झूठ बोल सकते हैं, खुद को झूठ बोल, लेकिन जो इटर्नल स्पेस है उसको नहीं झूठ बोल, क्योंकि आपका आइडेंटिटी जब लूज हो जाता है तब ऑटोमेटिकली आप चुपचाप से बैठ जाएंगे। यही आपका मेन सिनारियो। अगर ये नहीं हो रहा है आपके साथ, तो आप किसी न किसी आइडेंटिटी के हुक करके बैठे हैं और आप हेलुसिनेशन में हैं, जिस तरह से मैं भी हो सकता हूँ, पता नहीं। तो देखते हैं, आइडेंटिटी का खेल है ये। There is no the God in this culture. All the people you worship, your Rama, Krishna, Shiva, all these people are people who worked this geography at one time. You cannot say they did not work because they are still… Rama is still having real estate issues. And all of them, they did not fall from the sky, they did not appear somewhere. No, they were normal birth for their mothers, they grew up, they went to the trials and tribulations of life, more drama than what happens in your lives, all kinds of struggles. But the reason why we worship them is not because they were perfect human beings, they had all the troubles. But whatever the trouble, doesn't matter what life threw at them, their way of being was not disturbed. और आपका क्या कहना है? आप खुद को नहीं बोले सर जी, आप खुद को क्राइटेरिया से हटा के देवर कर रहे हैं। भाई देवर का बात छोड़िए, आप खुद का बात कीजिए, क्योंकि आदमी लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर मान लीजिए कल जीसस भी टपक गए आप पे, आप क्या क्वालिटी देखेंगे जीसस जी का? आप तो उन पर भी डाउट करेंगे, है ना, आए हैं नहीं आए हैं। शिव जी अगर आपके सामने आके बैठे हुए हैं तो आप उस पर डाउट कर रहे हैं। अगर गुरु जी इतना कुछ बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो है भाई, ये बात ऐसे कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कोई रामा के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है ना। तो अगर गुरु जी ये बता रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप विश्वास करें ना करें, कोई शब्द बोलने का आगे भी नहीं, इतना बड़ा पॉज हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी एम्प्टी है ये, इनके बारे में कोई बोलना ही बेकार है। चलो आगे बढ़ते। They were above it. And this is all you can do in your life. What life throws at you is not your choice, it'll throw all kinds of things at you. What you make out of it is 100% your choice. If you choose this… एक आप पत्थर भी मार दोगे ना, फूल बना के निकाल के दे देंगे। We will worship you in this country because you're free, because the only value we have in this culture, which this generation is forgetting, if you just talk to your mother, grandmother, for sitting down, standing up, they'll say mukti, moksha. Because the highest value is liberation, highest value is not God, highest value is not heaven, highest value is liberation, to become free from the process of life, to live here in such a way that life can do what it wants, but I will do what I wish consciously. It doesn't matter what life does, I will do only what I want. This is freedom. This is the only thing we value, this is the only thing we bow down to. This is not a religion.
This is an empowerment of life. But various other places they invented and they said there's one God up there and he will manage everything for you. Well, do one thing, you leave your examination, engineering examination to your God, let me see how he handles it. So am I talking about atheism? No. I want you to understand, what is considered theism and what is considered as atheism are not two different things. Both of them believe something that they do not know. One believes there is God, another believes there is no God. Why are you so stupid and arrogant? Why can't you say you don't know? The fact is you do not know, isn't it? Hello? Why is it though so difficult for a human being to say, I do not know? I do not know is the greatest possibility. क्यों भाई, आप लोगों को सिर्फ यही काम करना है कि मस्त मान लेना है कि मुझे पता नहीं, जो चीज़ पता नहीं भाई। अभी आदमी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आई डू नॉट नो वजह से मैं खोदने के चक्कर में लग गया, है ना। अब मुझे लगता था स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन है, पैसा आदमी करता है, लाता है, डुबाता है, सबको यहाँ पर गायब हो जाता है ना। तो एक सुपरफिशियल लेवल में ऐसा है, लेकिन कितने आदमी स्टॉक मार्केट के जो इसके अंदर के बात को जानते हैं, अंदर तक जाते हैं, इसमें झांक के देखते हैं। इसमें बहुत सारे नोवेल की तरह 4-5 किताब लिखा हुआ है, आप एक किताब भी ठीक से पढ़े ना तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। मार्टिन प्रिंग का जो बुक है एक मार्केट एनालिसिस का, मार्टिन प्रिंग बहुत अच्छा, हम लोग इंडिया में सबसे टॉप एनालिस्ट हैं, जो विशाल मनकाल के टीचर रह चुके हैं, नाम मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट। उन्होंने मार्टिन प्रिंग को 18 बार पढ़ा है, ठीक है। तो जब वो लोग चार्ट देखते हैं ना तो उन लोगों को बहुत कुछ दिखाई देता है, जो आदमी को लगता है कि वो इसी के ग्राफ चल रहा है। लेकिन आपको याद रखना है वो क्यों आया, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उनको पता नहीं था और वो सीखना चाहते थे उस चीज़ को, डिस्कार्ड नहीं किया। अभी 90% आदमी क्या बोलेंगे, स्टॉक मार्केट वो साला वो चोरी कर लेगा, पैसा ले जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा घर जुबेगा। होता भी है ऐसा, क्योंकि वो सोच में था उनका। आप एक डॉक्टरी करने के आगे 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं, स्टॉक मार्केट करने के लिए पैसा डायरेक्ट जाते हैं, वो भी आप दूसरे आदमी का कॉल लेके जाते हैं, तो आपका पैसा डूबना ही चाहिए, 100% डूबना चाहिए, है ना। आप कैसे ही डायरेक्ट जाके सर्जरी नहीं कर सकते किसी के ऊपर, आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको क्यों लगता है कि स्टॉक मार्केट इतना आसान है, जाके पैसे जो 2 दिन उन्होंने सुना नहीं स्टॉक मार्केट, यहाँ से कॉल खरीदना पुट खरीदना सीख लिया, डायरेक्ट उठाया। आपको एक्सेप्ट करना, आपको पता नहीं, आप सीखना चाहते हैं ना तो लगाइए 2 साल आप पढ़िए किताब ठीक से, मलकान व्यू का ठीक से लेक्चर सुनिए, आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है, उनके फ्री कोर्स में बहुत से ट्यूशन टेक्निकल टॉक्स का है, बहुत अच्छा चीज़ आप सीख सकते हैं। ये कहने मतलब अब रिलीजियस में भी ऐसा ही हो रहा है कि गॉड अब पता नहीं कौन है क्या है ना, लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि उनको पता नहीं। अगर वो जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो डेप्थ में देखेंगे उस चीज़ को ना क्या है। Your life, the moment you say, I do not know, the longing to know, wanting to know, seeking to know, and the possibility of knowing becomes reality in your life. Everything you do not know, you believe. You become dead when you're alive. Yes. If you believe something, the advantage of believing something is you get confidence. Confidence without clarity is the greatest disaster that is happening तो on… ये भी आदमी लोग सोच रहा है कि समझ लिए, अच्छा हो गया समझिए, नहीं, आपको रोकना है, आपके बारे में सोचना है क्या है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस क्लैरिटी का भी बहुत चक्कर है, 1 घंटा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। सब चीज़ को आप मान मत लीजिए कि आपको पता है, बस आपको ये जानना है कि मुझे पता नहीं है, तो आप उस चीज़ में ध्यान भी देंगे। this planet right now. When there is no clarity, there must be hesitation. Hello? Yes or no? मैं बार बार बोलता हूँ,
ये फ़ोटो देख के आप इतना एक्सटैटिक हो सकते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या है इसमें, क्योंकि आपका जितना भी फीलिंग्स होता है वो आपका खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जब एक लिमिटेड आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली अल्टीमेट से जुड़ भी जाते हैं। तो ये पावर है इनके साथ रहने में। अभी ये मुझे क्यों मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत कुछ और भी कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, सो सकते थे, मैं भी कर सकता था, लेकिन हम लोग क्यों यहाँ पर लगे हुए हैं किसी दूसरे को बचाने के लिए, अपने सोच में डूबा हो या फिर किसी न किसी तरह से डिप्राइव्ड हो। एक आदमी तक तो मैसेज पहुंच जाएगा भाई, और अंग्रेज़ी में आदमी को समझ में नहीं आता ठीक से, तो सोचा कि चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। और मुझे रिएक्शन वीडियो अभी सीख रहा हूँ कैसे बनाना है, उसके बाद मैं डेफिनेटली आऊँगा। Confidence is not a substitute for clarity. Unfortunately, religions in the world, even all the other kinds of philosophies, I believe in myself, not God anymore, I believe in myself. You trying to build confidence instead of sharpening your clarity. Confidence is not a substitute for clarity. Confidence without clarity is the greatest disaster that human beings are unfolding on this planet. See, suppose I want to walk through you, but my vision is not clear. I must at least be hesitant and seek help, please, can you help me? No, I'm confident. What'll happen? I'll step on everybody's face. But that's what they're doing. Those who are confident without clarity are stepping on everybody's faces and they're super confident because they're going to heaven. Hello? See, those who believe that there is a heaven, in their mind, if there is a heaven, they must proceed today, isn't it? The greatest crime that has been perpetrated upon the humanity is the idea of heaven, that there is a better place than this to live. This is the worst idea that has destroyed humanity. You are not eating well, you have no food, don't worry when you go there lot of food. Your life is not good, don't worry, when you go sit in God's lap, everything is fantastic. No, I want you to know, either you can make this into heaven or you can make this into hell. It's in our hands. Are we going to turn this into heaven or hell? This is the only place. The idea that there is a better place is the disastrous idea. If there is a better place, please go now. Hello? Why are you staying here and talking about better place? Why are you asking me to go? Why don't you go? Hello? If genuinely you're dead sure there is a better place, you must go right now, isn't it? Now you want other people to go? What is this? So these kind of nonsensical ideas have been flown for too long. It's time to end it. But this is not atheism or theism. This is just being a sensible human being. What I know, I know. What I do not know, I do not know. What's the problem? Sadhguru, my question to you is, it feels like at every point of human history, for society, there has always been this one challenge or one reckoning. For instance, for most of human history, a society's main issue would have been to protect itself from outsiders. In my opinion, right now, humanity's or society's issue is climate change or nuclear war. So it feels like solving this has been society's or the general consciousness's main purpose. My question is, suppose humanity makes it past this very tumultuous phase we're in right now, what would we do if we reach an ideal society where everyone is peaceful and together? What would our end game be? What would we strive towards?
Is it a deal between you and these guys? See, look at it this way, because you can't really figure what all these people want. Look at yourself. Right now you're thinking you want to become an engineer. Let's say right now I make you an engineer, this moment. Then you're thinking you need a job, I got your job. Then you're thinking you need a promotion, I got you. Then you think you need an award, I got you. Then you think you need wealth, I got you right now. Everything that you can dream of, I got you right now. What do you want now? Yeah, I can do that for you. Let's say I want a job. Huh? I'm striving for a job right now. Yes. Now, we are looking at the end game, right? You got everything you wanted right now. Things that you can imagine, things that you cannot imagine right now, everything you got right now. What do you want right now? I wouldn't know what to do. Just look at it, huh? See, when you say this, what it means is, all you want in your life, what you're seeking is struggle. To get a job, it must take 3 years, then you will feel, wow, I got a job. Look at all the people who have good jobs, look at them walking on the street. Are they going blissfully, dripping ecstasy? Hello? Miserable guys, they're getting blood pressure, going to work. They're getting all kinds of ailments, they're freaking out. Yes? So what do you want? What do you want now? Yeah, I can do that for you.